हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं कृपाल सिंह शेखावत और स्वागत करता हूं आपका एमएस एक्सेलर पर। आज का हमारा टॉपिक है क्रिएट अ सिंपल फार्मूला इन एक्सेल। कि एक्सेल में हम एक सिंपल फार्मूला कैसे क्रिएट करें। तो अगर कोई भी फार्मूला हम स्टार्ट कर रहे हैं, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद एन इक्वल साइन। सो अगर हमें एक्सेल में कोई भी फार्मूला यूज़ करना है तो फार्मूला हमेशा इक्वल के साइन से स्टार्ट होगा और हम कुछ ऑपरेटर्स का यूज करेंगे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उनके लिए ऑपरेटर्स यूज होंगे और इनके कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको अभी यहाँ पर बताऊंगा। जैसे कि अगर हमें कैलकुलेशन करनी है एडिशन की तो हम ऑपरेटर यूज करेंगे प्लस। जैसे फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे इक्वल्स से और हमें पहला नंबर डालना है अपना, उसके बाद हम ऑपरेटर डालेंगे और फिर दूसरा नंबर डालना है और उसके तुरंत बाद अगर हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमें अपना रिजल्ट मिल जाएगा। यानी कि इस फॉर्मूला की हम बात करें तो हमने पहले 5, उसके बाद ऑपरेटर प्लस और उसके बाद नंबर सेकंड यानी अनदर नंबर 5 वो हमने डाला और एंटर प्रेस किया तो हमारे पास उसका रिजल्ट आ गया। फिर जैसे कि हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो हम माइनस का साइन वहाँ पे यूज करेंगे। जैसे फॉर्मूला स्टार्ट विद एन इक्वल साइन, देन फर्स्ट नंबर, then the operator minus, and then we will put in the second number and press enter to get the result. Once again, if we have to multiply, so for multiplication we will use the asterisk sign that we will find on number 8. So for multiplication we will first use the equal sign, then the first number, then the operator asterisk, and then the second number, and after that we will press enter to get the result. Now let us go for division. So to divide a number we will use forward slash as an operator. So if we will generally start the formula without equals, it will not give us any result. So uh, we will need to put in equals at first. So equals, then the first number that we want to divide, then the operator forward slash, and then the second number that we want to divide with. So, and after that press enter to get the result. So it's so simple for addition. So always start the formula with equals and just put in the operator as we do in our math classes. Now there is one more thing that if we want to sum a table, so we want to get the grand total. So to get the grand total, it's just simple. Press and hold the Alt key on your keyboard and then press the plus sign. So Alt plus plus, and you will get the grand total. So you can see it gives us the grand total from F7 to F11. You can see the number 30 is on the address for number 30 is F7, and the number which is for class 5th, it is F11. So we will get the grand total starting from F7 till F11. So the grand total of all these numbers is 197 that we have here. So what we have to use, we will need to use Alt plus, type Alt plus equal sign. You can see at the top Alt plus equal sign. So Alt plus equal sign will give you the grand total. So if you have liked this video, do not forget to subscribe the channel, like the video, share it with some needy person, and if you have any questions or suggestions, feel free to comment. So see you in the next video. Thanks for now.